Good evening, all the viewers, and welcome to my channel, Alok's Vlog. So, I'm once again back with a new film review. Just like you know, as a film critic and as an avid follower of cinema, I just love to post reviews in the form of text as well as audio visuals whenever I see or I watch any fantastic movie. So, this evening, I had the ecstasy or the visual pleasure of watching the newly released American spy action genre film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 with Hollywood star Tom Cruise in the lead cast, playing the role of Ethan Hunt, an IMF agent who had to face the deadly enemy and a deadly weapon of artificial intelligence called Entity. And he had all the challenges, and his entire team had all the challenges in the plot to save the earth or save all the humanity from the deadly enemies. So, a very, very nice and action packed movie, this American spy action genre film. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, which is a direct sequel to the Mission Impossible Fallout, the 2018 movie, and the seventh installment of the Mission Impossible film series. So Tom Cruise has returned with a bang in this film. Superstar Tom Cruise, he acted brilliantly. And especially what I liked about the movie mainly are the visual effects. The visual effects, especially while depicting the action sequences, especially in the climax scenes or in the climax sequences, the deadly action sequences of Tom Cruise and his team on the running train in the midst of the mountainous terrains, then his jump with the parachute on screen from the mountains while trying to jump on the train, and all the other action sequences were absolutely a visual delight, or rather I should say an absolute ecstasy on the part of the ophthalmic apparatus of me. And very, very brilliantly directed by Christopher McQuarrie. This film has already made or already has taken the box office by storm in the international box office. This has already made the tempestuous or stormy or cyclonic beginning and hope, and already has emerged as one of the highest grossers of the Hollywood films in the year 2023. So it was really a veritably visual ecstasy on the part of me to watch this film, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, starring Tom Cruise in the lead cast. And absolutely, I relished this movie, and it was a sort of cherophilic experience on the part of me as a film critic, as a film reviewer, as an avid or ardent moviegoer, and as a filmaholic or as a cine addict or cine hysteric. So just love this film, and of course, and a positive review will emanate from my psychic and intellectual apparatus for this American spy action genre film. And one more thing I liked about the movie is that the plot has been very, very serious one, and unlike many of the movies, the background scores were pretty good, and the screenplay was fabulous, the cinematography, the visual effects, the dialogue deliveries, and the narrative as well as the script all have been absolutely brilliant. And in the real sense of the term, the spy action thriller film has justified its genre. And Tom Cruise has once again proved his class. Obviously, it's known to all every Cine-Goers or all the film lovers or film enthusiasts. Tom Cruise is such a massive star in Hollywood. So it was really a treat to watch, a visual delight, a visual exhilaration, and it was really a euphoric experience or euphoric evening on the part of me to watch this movie, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, and hopefully the Part 2 that will be released hopefully next year will also shower a great deal of entertainment on the up and up Cine-Goers. So I hope that this film, which has already made a cyclonic or cyclopean or tempestuous beginning in the box office, was a wholesome entertainer on the part of the captive audiences inside the movie theaters. And I was also no different as a film lover, as a film enthusiast, and the most importantly as a film critic, film analyst, and film reader and film connoisseur. I just love this film from the depth of my heart, and my review will be positive, and hope to see such brilliant Hollywood movies or the American movies coming up in the next, very shortly. So on that note, I would like to wrap up this video. And before winding up, I would like to once again say that it was a gem of an entertainment, a nice direction, superb cinematography, superb screenplay, superb production, superb camera work, superb visual effects, and most importantly, the action sequences, especially up on the running train, were absolutely treat to us, or rather I should say a sort of goosebumpy experience, and must have corroborated to be a wholesome entertainer on the part of the audiences, on the part of the captive audiences inside the movie theater. So rather I should state that it was a sort of an edge of the seat thriller on the part of the audiences, and of course I was also no different in this regard, because it must have made the audiences to keep their eyes glued to the silver screen right till the climax sequences, because nothing was sure what will happen
and must have been a breathtaking encounter, or rather breathtaking experience on the part of the captive audiences inside a movie theater. So it was really a jam of an entertainment. I just loved it from the depth of my heart and hope to see the part 2, that is Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, the sequel to this film, or the 8th installment of the Mission Impossible film franchise, which will be hopefully released next year, that is in the year 2024. So once again, I would like to say that a positive review from my side as a film critic and as a film reviewer for the newly released American spy action genre film Mission Impossible Part 1, Dead Reckoning Part 1, starring Hollywood superstar Tom Cruise in the lead cast. So on that note, let me wrap up this video and please keep on subscribing my channel Alok's Vlog. So दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल Alok's Vlog पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी मैं अच्छा मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे रिव्यूज़ पोस्ट करना अच्छा लगता है, रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हो। तो आज शाम मेरे लिए रहा एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। न्यूली रिलीज अमेरिकन स्पाई एक्शन जॉनर मूवी मैंने देख लिया है, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, टॉम क्रूज लीड कास्ट पर, और एक स्पाई थ्रिलर मूवी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और ख़ास करके जो ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पर जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे मूवी में, ख़ास करके क्लाइमेक्स सीक्वेंस पर, तो विजुअल इफेक्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा, स्टोरी लाइन भी बहुत ही बेहतरीन रहा। एथन हांट का जो कैरेक्टर, जो किरदार पोर्ट्रे किया है हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने, और जो एक ख़तरनाक दुश्मन और ख़तरनाक वेपन से पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने का जो स्टोरी लाइन, जो प्लॉट रहा, वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और ये 7वां फिल्म था मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ का, और डायरेक्ट सीक्वल था मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, जो इस सीरीज़ का 6ठा फिल्म था शायद, जो 2018 में रिलीज़ हुआ था। और उम्मीद करता हूँ जो इस फिल्म का जो सीक्वल अगले साल आने वाला है, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, और ये था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, होपफुली वो भी अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए ये मूवी बहुत ही खास रहा, और एक फिल्म क्रिटिक और रिव्यूअर के हिसाब से मेरा रिव्यू रहेगा पॉजिटिव। ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने धमाका कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त बिगनिंग हुआ है, और शायद 2023 का अब तक का पहला या दूसरा सबसे बड़ा हिट हॉलीवुड मूवी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा हॉलीवुड मूवी देखने को मिलेगा, और इसका जो सीक्वल आएगा अगले साल वो भी अच्छा रहेगा। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1, टॉम क्रूज द्वारा अभिनीत अमेरिकन स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी बहुत ही बेहतरीन रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा मूवी देखने को मिलेगा। तो कुछ और नए रिव्यूज़ के साथ फिर से हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कृपया मेरा चैनल ऑलोकेज ब्लॉग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল অলোকেজ ব্লগলৈ। তো আপোনালোকে জানে যে ফিল্ম সমালোচক বা ফিল্ম ৰিভিউৱাৰ হিচাপত মই যেতিয়া ভাল কথা ছবি উপভোগ কৰোঁ, মই তেতিয়া ৰিভিউজ পোষ্ট কৰোঁ, অডিঅ' ভিজুৱেল ফৰ্মেটত হওক বা ৰিটেন টেক্সট ফৰ্মেটত হওক। তো আজি সন্ধিয়াও মই এখন খুব সুন্দৰ এখন হলিউডৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকান স্পাই একশ্যন থ্ৰিলাৰ মুভি উপভোগ কৰিলোঁ, হলিউড ছুপাৰষ্টাৰ টম ক্ৰুজ লিড কাষ্টত। আৰু মুভিখনৰ টাইটেল শিৰোনাম আছিলে মিছন ইম্পচিবল ডেড ৰেকনিং পাৰ্ট 1, যিখন অভাৰঅল 7ম কথাছবি মিছন ইম্পচিবল ছিৰিজৰ, আৰু ডিৰেক্ট ছিকুৱেল আছিলে মিছন ইম্পচিবল ফল আউট, যিখন কথাছবি 2018 ৰিলিজ হৈছিলে। আৰু এক সুন্দৰ কাহিনী আৰু একশ্যন ছিকুৱেঞ্চেছ, এস্পেচিয়েলি ভিজুৱেল ইফেক্টবোৰ বহুত ভাল লাগিলে। বিশেষকৈ ট্ৰেইনৰ ওপৰত যিটো একশ্যন ছিকুৱেঞ্চ ক্লাইমেক্সত, তাৰ বাহিৰেও ডায়লগ ডেলিভাৰী, স্ক্ৰিপ্ট হওক, ডিৰেকশ্যন হওক, চিনেমেটোগ্ৰাফী হওক, কেমেৰা ৱৰ্ক, সকলোখিনি যথেষ্ট ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ ৰিভিউ হ'ব পজিটিভ, আৰু এস্পেচিয়েলি টম ক্ৰুজৰ এক্টিং আৰু বাকী কাষ্টবোৰৰ এক্টিং যথেষ্ট ভাল লাগিলে। চ' আশা ৰাখিছোঁ মুভিখনে, যিখন অলৰেডি বক্স অফিচত খুব মানে এটা জবৰদস্ত বিগিনিং কৰিছে, আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই টেম্পোটো কণ্টিনিউ কৰিব, আৰু ইয়াৰ যিটো ছিকুৱেল হোপফুলি অহা বছৰ ৰিলিজ হ'ব 2024 মিছন ইম্পচিবল ডেড ৰেকনিং পাৰ্ট 2, সেইখনো ভাল লাগিব। চ' ইয়াৰ লগে লগে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰবাৰ কিছু নতুন ৰিভিউ বা আন আন ভিডিঅ'ৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম, আৰু তেতিয়ালৈকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেল অলোকেজ ব্লগ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মিছন ইম্পচিবল ডেড ৰেকনিং পাৰ্ট 1, টম ক্ৰুজ দ্বাৰা অভিনীত আমেৰিকান স্পাই একশ্যন জনৰ ফিল্ম যথেষ্ট ভাল লাগিলে, আৰু মোৰ रिव्यू होगा पॉजिटिव और धनात्मक। सो यार अगले विदाय में किसी शुभरात्रि, धन्यवाद। तो दोस्तों फिर इजाजत दीजिए आज के लिए, कुछ और नए रिव्यूज के साथ फिर से हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभरात्रि। So friends, on that note, let me wind up this video for tonight. We'll be back with some new reviews and some other audio visuals very soon. Until then, please don't forget to keep on subscribing my channel Alok's Vlog. And before winding up, once again, I would like to say that a damn positive review from my side as a film critic and film reviewer for Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, the American spy action genre film, casting Hollywood superstar Tom Cruise in the lead cast. What a movie, a gem of an entertainer, very deeply. So bye-bye and love you all.